हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए जॉब अलर्ट लेके। जी हां दोस्तों, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC में कुछ वैकेंसीज आई हैं, जो कि अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 3 कैटेगरीज में वैकेंसी आई है। आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताया गया है दोस्तों कि कौन सी वैकेंसी में कौन सी पोस्ट हमारे लिए रिजर्व है। मतलब कि जो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, यानी जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व की गई हैं, चाहे वो MTS की हो, चाहे वो UDC की हो, चाहे वो स्टेनो की हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बिना स्किप करे। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखने से पहले ही आप इसको विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को ये लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों, बहुत से कम, मैं कहूँगा ऐसे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको डिटेल में विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में वैकेंसीज बताता है। हमारा चैनल आपके लिए प्रयास कर रहा है। अगर हमें सपोर्ट अच्छा मिला आगे इस वीडियो पे, तो हम जॉब अलर्ट को कंटिन्यू रखेंगे, वरना हमें इसे स्टॉप करना होगा। क्योंकि जब आप लोग ही नहीं देखेंगे तो हमारा कोई मकसद नहीं बनता है बनाने का, ठीक है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही हम आगे से आगे जो जॉब्स की रिलेटेड वैकेंसीज हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो जो ये वैकेंसी है दोस्तों, ESIC, ठीक है, ESIC है ना, मैं दोबारा बता देता हूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। 3 कैटेगरी में वैकेंसी आई है और तीनों ही कैटेगरी में हमारे लिए रिजर्व वैकेंसी है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये डिवीजन वाइज आई है, ठीक है। जैसे हरियाणा, दिल्ली, पटना, आसाम। तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई गई है कि कौन से डिवीजन में, कौन सी कैटेगरी में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, इसकी जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी 2022 को इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम की क्या डेट रहेगी वो इन्होंने नहीं बताई है अभी। वो ड्यू टू कोविड जो भी नोटिस होगा, जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो हमारी वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों, कई लोगों की ये कंप्लेंट रहती है, मुझे कई लोगों ने कमेंट भी किया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि कई लोग कहते हैं कि भैया ये इंग्लिश में आती है आपकी वीडियो, इसे हिंदी में लाएं। तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक इंग्लिश होती है, ठीक है। जो हमारी टीम है अभी वो इंग्लिश मैनेजमेंट के हिसाब से है। अभी हिंदी के लिए हमने वर्कआउट कर दिया है। जैसे कोई हमारी टीम आ जाएगी, ठीक है, हम अपनी पोस्ट भरेंगे, तो जैसे कोई टीम आ जाएगी तो हम हिंदी के लिए भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए लाया जाए, ठीक है। दोस्तों, बस अब आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो उतना भी इंग्लिश में नहीं होता है कि आप लोगों को समझ ना आ सके। वैकेंसीज वगैरह जो बताई जाती हैं बेसिक इंग्लिश होता है, ठीक है। तो अभी मैं हिंदी में, तो प्योर हिंदी में उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, तो आप इंग्लिश में ही इसे समझने का प्रयास कीजिए। और इतना भी कोई टफ इंग्लिश नहीं होता है कि आपको समझ ना आए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। और दोस्तों, आगे वीडियो में कंटिन्यू बताया गया है, हमारी टीम ने बताया है आपको कि कितनी वैकेंसीज हैं और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। और जितना भी नोटिफिकेशन में राइटर या स्क्राइब गाइडलाइन क्या रहेगी हमारी, है ना, तमाम डिटेल के लिए। और दोस्तों, जो नोटिफिकेशन है पहले वो बताया है और वीडियो के लास्ट में बताया है कि हमारे लिए कितनी वैकेंसी है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, और जो कैटेगरी है उनके लिए कैटेगरी वाइज बताया है, ठीक है। तो आपने इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखना है और इसे शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूँ और अपनी टीम
टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको वैकेंसीज बताएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन भी रीड करके बताएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली फॉर विजुअली इंपेयर्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की जॉब अलर्ट तथा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तथा दिव्यांगजनों के लिए जो स्कीम लॉन्च होती हैं या यूडीआईडी कार्ड, ऑनलाइन रेलवे ई कंसेशन कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको डबल टैप करके ऑल पे सेट कर लीजिए और जाइए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में, उसे देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको छोटे से इंट्रो के बाद, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। Hello everyone and welcome to the information desk for visually impaired YouTube channel. Let's look at recruitment to the post of Upper Division Clerk, UDC, Stenographer and Multitasking Staff MTS for Delhi region in ESI Corporation. Online applications through the website of ESIC at www.esic.nic.in are invited for filling up the post of Upper Division Clerk, UDC, Stenographer and Multitasking Staff MTS on regular basis by direct recruitment in ESIC as under. Details of vacancies. There are 5 categories, namely Category 1 includes blind and low vision. Category B includes deafness and hard of hearing. Category C includes one arm, one leg, both arm, one arm and one leg, cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy. Category D includes specific learning disability and mental illness, and Category E, multiple disabilities involving A to D above. Now for the post of Upper Division Clerk, UDC, for PWD Category A has 4 seats, Category B 2, Category C 3 and Category D and E 2. For X-Men, total number of seats 23. For stenographer, Category A has 1 seat, Category B 0, Category C 0, Category D and E also 0. For MTS, Category A includes 5, Category B 5, Category C 4 and Category D and E 4. Now, scale of pay for UDC and stenographer, pay level rupees 25,500 to 81,100 as per 7th Central Pay Commission. For MTS, pay level rupees 1,800 to 56,900 as per 7th Central Pay Commission. In addition to pay, they will also be eligible for DA, HRA and transport allowances and other allowances as per rule in force from time to time. Essential qualification and other qualification for UDC, a degree of a recognized university or equivalent, working knowledge of computer including use of office suites and databases. For stenographer, 12th class pass or equivalent from a recognized board or university. Skill test norms, dictation 10 minutes at the rate 80 words per minute, transcription 50 minutes English, 65 minutes Hindi, only on computers. For MTS, matriculation or equivalent pass from recognized board. Please note that candidates who have not acquired will not acquire the educational qualification as on the closing date of receipt of online application will not be eligible and need not apply. Age limit for UDC and stenographer between 18 to 27 years as on the closing date for receipt of application, that is 15 February 2022.
for MTS between 18 to 25 years as on the closing date for receipt of applications, that is 15 February 2022. Now, payment of fee. Amount of application fee. Candidate category SC, ST, PWD, departmental candidates, female candidates and ex-men. This fee amount is 250, and this fee of rupees 250 shall be refunded, duly deducting bank charges as applicable on appearing of the candidate in the phase 1 written examination. For all other categories, rupees 500. Now let's look at the scheme of examination. Scheme of examination for the post of upper division clerk. Preliminary examination qualifying in nature. Name of the test, objective tests, general intelligence and reasoning. Number of questions 25, maximum marks 50. General awareness, number of questions 25, maximum marks 50. Quantitative aptitude, number of questions 25, maximum marks 50. English comprehension, number of questions 25 and maximum marks 50. And the duration is going to be 1 hour for all the tests. Version could be both Hindi and English. Please note that preliminary examination is qualifying in nature and marks will not be reckoned for final merit. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the marks assigned to that question. The candidates will be shortlisted for phase 2 in the ratio of 1:10, that is about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 1 preliminary examination. Phase 2 main examination. General intelligence and reasoning, number of questions 50, maximum marks 50. General awareness, number of questions 50, maximum marks 50. Quantitative aptitude, number of questions 50, maximum marks 50. English comprehension, number of questions 50, maximum marks 50. And the duration is going to be 2 hours for each of the tests. Version is bilingual, that is both Hindi and English. Please note, the marks obtained in phase 2 main examination will be considered for final selection. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the marks assigned, 1/4 of the mark assigned to that question. The candidates will be shortlisted for phase 3 computer skill test in the ratio of 1:5, that is about 5 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in phase 2 main examination. Phase 3 computer skill test qualifying in nature. Description of test. Preparation of 2 PowerPoint slides, marks 10. Typing matter on MS Word with formatting, marks 20. Preparation of table on MS Excel with use of formula, marks 20. And total marks for all is 50. Duration 30 minutes each. Please note, the working knowledge of computer in respect of PWD candidates who are unable to type shall be assessed by holding an objective type computer test of 50 marks having 50 questions with no negative marking. Computer skill test will be qualifying in nature. Marks obtained will not be reckoned for merit ranking. Scheme of examination for the post of stenographer. Phase 1 main examination. English language and comprehension, number of questions 100, maximum marks 100, duration 70 minutes. Version Hindi and English except English language and comprehension. Reasoning ability, number of questions 50, maximum marks 50, duration 35 minutes. General awareness, number of questions 50, maximum marks 50 and duration 25 minutes. Please note that the marks obtained in phase 1 main examination will be considered for final. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to that question. The candidates will be shortlisted for phase 2 skill test and stenographer in the ratio of 10:1:10, that is about 10 times the number of vacancies
in each category on the basis of their performance in Phase 1. Phase 2 skill test in stenography. The candidates who are shortlisted in the main examination will be required to appear in the skill test of stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidate in the online application form at the speed of 80 words per minute. The matter will have to be transcribed on computer. The transcription time is as under. Language of skill test: English, duration 50 minutes. Time duration for PWD candidates eligible for scribe 70 minutes. For Hindi, time duration 65 minutes. For PWD candidates eligible for scribe 90 minutes. Please note, the qualifying marks in Phase 1 main examination will be 45% for UR category. For the category of SC, ST, X-Men service category, 35% and 30% for PWD category. Scheme of examination for the post of multitasking staff. Name of the test: objective tests, general intelligence and reasoning, number of questions 25, maximum marks 50. General awareness, number of questions 25, maximum marks 50. Quantitative aptitude, number of questions 25, maximum marks 50. English comprehension, number of questions 25 and maximum marks 50. Duration for each is 1 hour. Version could be both Hindi and English. Please note that Phase 1 preliminary examination is qualifying in nature and marks will not be reckoned for final merit. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the mark assigned to that question. The candidates will be shortlisted for Phase 2 in the ratio of 1:10, that is about 10 times the number of vacancies in each category on the basis of their performance in Phase 1 preliminary examination. Main examination: for general intelligence and reasoning, number of questions 50, maximum marks 50. General awareness, number of questions 50, maximum marks 50. Quantitative aptitude, number of questions 50, maximum marks 50. English comprehension, number of questions 50 and maximum marks 50. Duration for each of the test is 2 hours. Version is both Hindi and English. Please note, the marks obtained in Phase 2 main examination will be considered for final selection. For each wrong answer, there will be a negative marking of 1/4 of the marks assigned to that question. The qualifying marks is 30% for PWD category. Now let's look at guidelines for persons with disabilities using a scribe. The facility of scribe shall be given only to persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability, both arm affected, and cerebral palsy, if so desired by the person. For other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write and scribe is essential to write examination on his behalf. From the Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical Superintendent of a government healthcare institution, as per prescribed performer appended at Annexure G. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply. In accordance with Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disability Divyangjan OM number 34/2/2015 DD3 dated 29 August 2018 on the subject Guidelines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disability, the PWD candidates eligible for scribe has discretion of opting for his own scribe or request the examination body for the same. In case the candidate has opted to bring his own scribe, the qualification should be one step below the minimum qualification criteria for the post.
In case subsequently it is found that the qualification of scribe is not one step below the minimum qualification criteria of the post, the candidature of the candidate shall liable to be summarily rejected. Accordingly, PWD candidates who are eligible for scribe can make a request to the concerned ESIC regional office for providing scribe. The contact details of concerned regional directors will be uploaded on ESIC website at the time of holding examination. For eligible PWD candidates using their own scribe in the above examination are required to submit scribe declaration form on the day of examination at the examination venue. The candidates eligible for scribe will be allowed compensatory time of 20 minutes per hour in examination. However, PWD candidates other than having disability of blindness, locomotor disability, both arm affected, and cerebral palsy shall have to produce requisite certificate at the time of examination as given in Annexure G for availing assistance of scribe and for compensatory time. The candidate will have to arrange his or her own scribe at his or her own cost, or they may make a request in the online application for providing of scribe by ESIC. The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both the candidates will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the service of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favorably entertained. A person acting as a scribe for one candidate cannot be scribe for another candidate. Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria mentioned above. Further, in case it later transpires that he or she did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppress material facts, the candidature will stand cancelled, irrespective of the result of online examination. Scribe should not answer on his or her language. Any such behavior observed will result in cancellation of candidature. Only candidates registered for compensatory time will be allowed such concessions. Since compensatory time given to the candidate shall be system based, it shall not be possible for the test conducting agency to allow time if he or she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions. That is all for today. Thank you. Now, let's look at vacancies available in Haryana region for the post of UDC, stenographer and multitasking staff, that is MTS, for visually impaired category. For UDC category YA, seat 1. For category YB, number of seats 1. And for category YC, number of seats 1. For category D and E, number of seats 1. For stenographer category YA 0, category YB 0, category YC 1, category D and E 0. For MTS category YA 1, category YB 1, category YC 0 and category D and E 1. For Northeast region in ESI Corporation, for the post of UDC Upper Division Clerk, PWD category A 0, category B 0, category C 0, category D and E 0. For MTS category A 0, category B 1 HH, category C 0, category D and E 0. For Bihar region in ESI Corporation, for the post of UDC category A 0, category B 0, category C 1, category D and E 1. For stenographer category A 0, category B 0, category C 1, category D and E 0.
MTS Category A1, Category B 0, Category C 0, Category D and E 0. That is all. Thank you.